Okay, let's talk about the first question. This question, what do you think? What are static blocks and static initializers in Java? Static blocks and static initializers, both are same? Okay, okay. So static block is a block of code like with the static keyword. So it is block of code enclosed in curly braces with the static keyword outside of all other components. Okay. Static initializer is something we initialize the static variables inside that. Means inside that we initialize the variables. Mostly in static block also you can initialize, that is also fine. Okay. Next concept is how to call one constructor from the other constructor. So in a class we have multiple constructors. Then I want to call a constructor from another constructor. So what do we use? This keyword. Perfect. So we use this keyword. We use this keyword, and this is how we call the constructor. This is a call to the constructor. Method overriding we haven't seen, so we'll not cover this. What is super keyword, that also we'll not see. Difference between method overloading, overriding we haven't seen. This is part of OOPS. Then difference between abstract class interface, this also we are yet to complete. OOPS part we have to complete. Then why Java is platform independent? Okay, so we can write the code only once. We can run on anywhere provided there is a JRE installed on that machine. Perfect. What is method overloading? We haven't seen, but I can just tell you. We can define multiple methods with the same name but different signature, different parameters. तो उसे बोलते हैं हम method overloading. Okay. Constructor overloading also we have done. We have defined multiple constructors, 0 parameterized, 1 parameterized, 2 parameterized. तो उसमें हमने देखा था, right? So we have already overloaded the constructor. Can we overload the constructor? Yes. Can we override the constructor? No. We cannot override the constructor. Yes. So what is method overloading? Okay. What is the difference between C++ and Java? Perfect. Perfect. So what is JIT compiler or just-in-time compiler? It is a part of Java runtime system. JIT stands for just-in-time compiler, which improves the performance of the application execution. This is part of Innovent execution engine, part of JRE. What is bytecode? Correct. So bytecode is just an intermediate code. We get it after we compile the Java file. Dot class file is. This is also called as magic code also. Magic code भी बोलते हैं या intermediate code also. Difference between this and super. So this you already know. What is that? इसका यूज करके आप कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हो. दिस ये कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो किसका? सेम क्लास का. सुपर का यूज करके आप सुपर क्लास यानी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हो. सो विल कवर दिस इन इनहेरिटेंस. व्हाट इज अ क्लास? What is a class? It is a blueprint, template, structure, set of rules, set of guidelines to create object. What is an object? It is an instance of a class which represents actual memory location and allocation. What is a method in Java? It is a set of instructions, set of statements included inside curly braces, which has name, which might accept the input, might return output also. What is encapsulation?
Okay, binding methods and data together as a single unit, it is called as encapsulation. Okay, so why main method is public, static, and void in Java? Public means we can access this throughout anywhere. Static means perfect, perfect. So if JRE wants to call the main method, they don't need to create the object of that class. They can directly call with the help of class name. And void, it does not return anything. Perfect. What is constructor in Java? It is a method which has same name. Okay. Can it have a return type? Modifier? No. Yes, access specifier we can specify. What is the difference between length and length? And this one? It is a variable associated with an array. To find the length of an array, we use length variable. And length is a method which is available in the string class, which is used to get the length of the string. What is ASCII code and what is Unicode? So these are just a encoding standard. C and C++ follow ASCII code. For each character they have given some number, and Unicode it is followed by Java. Both are different systems. Both are different systems. Difference between character constant and string constant. So if a variable whose value is not changed and that is a character type, it is called as character constant. And if a variable, if I create a variable that is of type string and it is made as final, final means does not change the value, then it is called as string constant. How to create a string, how to create constants? We use public, static, final, and let's say I have to create a variable int a equal to, let's say, 10. So a value will never change. It is final and it is public and it is static. So this is how we create a constant. Public, static, final, int a equal to 10. So we will be covering final keyword. Difference between right shift and unsigned right shift. So both of these are bitwise operators. Both of these are bitwise operators. So one is unsigned right shift operator and which will consider the sign. So this is called as unsigned right shift bitwise operator. इसमें आपका sign consider नहीं हुआ, इसमें sign consider होगा positive negative का. Okay, what are the standards for coding standards for classes or conventions for classes? क्या standards है? क्लास कैसे लिखना चाहिए? Upper camel case, upper camel case. So name of the class should be upper camel case. Starting from the first word itself, first letter should be capital. ठीक. Explain Java coding standards for interfaces. Same thing, just like the class. For the methods, we should write lower camel case. This should be lower camel case. And constants, words should be capitalized and separated by underscore. Perfect. So words should be capitalized and they should be separate. If you have multiple words, let's say product quantity. So product and quantity will be capital and they will be joined with underscore. हाँ, constants मतलब final keyword हमने देखा नहीं है, but that we will be covering. Method overriding and overriding we haven't seen. What is a type? That also we haven't seen. Has a type also we haven't seen. Difference between this. Instance of also we haven't seen. What does null mean? What does null mean? Nothing, empty. Null means it does not return. Null means nothing.
You can think of null means it is not pointing anywhere. So we can assign it to references. Null means no memory address. Can you have multiple classes in a single file? Yes, but only one public class. We can have multiple classes in a single file, but only one public class. What all access modifiers are allowed for top class? Perfect, public and default. What are packages in Java? It is kind of a folder which is used to put logically related classes together. And to create a package, how do we use package, and we write the package name, and that particular file should be part of that particular folder. Can we have more than one package statement in source file? The 38th question, what all access modifiers are allowed for outclass? Access modifiers are static and abstract. Yes. So a lot of people use access modifier and access specifier interchangeably. A difference we have created for our thing, access specifier will say public, private, protect, default, but lot of people say public, private, protect, default also access modifiers. Okay. So what are packages in Java? This is just a logical folder which we use to create to put logically related classes. Can you have more than one package statement in a source file? क्यों क्यों? हाँ, तो उसके अंदर एक पैकेज स्टेटमेंट कितने सारे लिख सकेंगे हम? एक फाइल कितने फोल्डर को बिलोंग कर सकता है? ओनली वन. तो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते. आंसर इज नो. कैन वी डिफाइन पैकेज स्टेटमेंट आफ्टर द इंपोर्ट स्टेटमेंट? नो. पहला सबसे पहला लाइन कौन सा होना चाहिए? पैकेज का. व्हाट आर आइडेंटिफायर्स? Okay, so identifiers are just a name given to a class, method, or a variable or a package, right? What are access modifiers and specifiers? One and the same thing. So they are asking the difference between access specifier and modifier. So both of these are used to specify the accessibility of your class components. Accessibility means who can access or who can modify the. Modifier means they are going to modify the existing accessibility, right? So access specifier and access modifier, some people use it interchangeably, but you can use access specifier for our understanding, public, private, protect, default. This is our understanding, and access modifiers are static, final, like that. What access modifiers can be used for class? Public and default. What access modifiers can be used for methods? Public, private, protected, default. Same thing for the variable system. What is final access modifier? Final access modifier means if you make a variable final, then we cannot change the value of that. If we apply a final keyword on a class, we cannot extend that. If we apply a final keyword on a method, we cannot override that. So this thing we are going to learn over the time. Explain about abstract classes. We haven't seen, but abstract class is a class which is created with the abstract keyword. We just write the abstract keyword before that and we write the class. Can we create constructor inside the abstract class? Answer is yes, we can create. What are abstract methods in Java? So abstract methods are the methods which we create with the abstract keyword. So पहले हम abstract लिखेंगे और उसको हम बॉडी नहीं लिखेंगे. कर्ली ब्रेसेस जो लिखते हैं मेथड का वो हटा के सेमीकोलन दे देंगे, उसे बोलते हैं abstract method. That we are going to learn once we know the OOPS concepts. So this exception handling we haven't covered. Okay. Exception handling related questions. This also we haven't covered.
Okay, this one we can think of. What are nested classes in Java? A class inside another class. What are inner classes or nested classes in Java? Without static modifier or keywords outside of all the components. Why to use nested classes? Or what is the purpose of nested class? Related classes. Perfect. What are static nested classes? Class components. Perfect. How to instantiate static nested class in Java? हाउ टू इंस्टेंशिएट मतलब कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम स्टैटिक नेस्टेड क्लास का। पहले हमें मतलब आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत है क्या? नहीं। तो क्या करेंगे, आउटर क्लास डॉट इनर दी नेस्टेड क्लास, उसका रेफरेंस नेम इक्वल टू न्यू और उसका रेफरेंस क्लास का नाम आउटर क्लास का डॉट नेस्टेड क्लास का नाम। दैट इज हाउ वी एक्सप्लेन अबाउट मेथड लोकल इनर क्लासेस और लोकल इनर क्लासेस। What is local inner class? मेथड के अंदर जब या कंस्ट्रक्टर के अंदर या ब्लॉक के अंदर जो क्लास हम डिफाइन करते हैं उसे लोकल इनर क्लास बोलते हैं। परफेक्ट। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लोकल इनर क्लास? फीचर्स, कैन यू टेल मी? वी हैव सीन दिस। जहां पर आपने क्लास डिफाइन करा है मेथड, वहीं पे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे और वहीं से एक्सेस करोगे। और दूसरा, उसके अंदर क्या क्या लिख सकते हो आप? परफेक्ट, राइट। दूसरा, एक्सप्लेन अबाउट एनोनिमस इनर क्लास। एनोनिमस क्लास या इनर क्लास, अ क्लास विच इज क्रिएटेड विदाउट नेम। अभी हम ये जैसे पढ़ेंगे, जैसे इनहेरिटेंस हमारा खत्म होगा तब हम पढ़ेंगे। तो एनोनिमस क्लास हम क्रिएट क्यों करते हैं? सब क्लास क्रिएट करने के लिए या चाइल्ड क्लास। रिस्ट्रिक्शन क्या होता है एनोनिमस क्लास का? कि वो हमेशा सब क्लास ही होता है, वो हमेशा सब क्लास ही होता है। इज दिस वैलिड इन जावा? कैन वी इंस्टेंशिएट इंटरफेस इन जावा? मतलब हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं क्या? आंसर इज नो। इंटरफेस होता क्या है? ये भी एक क्लास का टाइप ही है, हम देखने वाले, लेकिन इस क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। ओके, so explain about in member inner classes. Same thing, they are talking about the inner classes. Can we instantiate member classes, that is inner classes? Yes, we can. How to do encapsulation? We declare variable as private and then we access it to public getters and setter methods. We make the data members private and we access them with the help of public getter and setters. What are reference variables? Which shows the memory location of another. It is a variable which stores the address of another object. Will the compiler creates a default constructor if I have a parameter as constructor in the class? Answer is no. जब भी आप कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते हो तभी आपको ये कंस्ट्रक्टर मिलता है। कैन वी हैव अ मेथड नेम सेम एज योर क्लास नेम? यस, वी कैन हैव। वी कैन हैव। कंस्ट्रक्टर होगा तो उसको रिटर्न टाइप नहीं होगा। कंस्ट्रक्टर लिख दिया तो मतलब सेम नाम लिख दिया और उसको रिटर्न टाइप लिख दिया तो ये बन जाएगा आपका मेथड। करेक्ट। कैन यू ओवरराइड कंस्ट्रक्टर? आंसर इज नो। ये हमने देखा नहीं, लेकिन वी आर गोइंग टू लर्न। बट अभी के लिए बस रिमेंबर कर सकते हो कि कंस्ट्रक्टर वी कैन नॉट ओवरराइड। कैन स्टैटिक मेथड्स एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल्स इन जावा? क्या क्वेश्चन है? मतलब स्टैटिक मेथड्स इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते क्या? आंसर इज यस,
डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, देन यू कैन डू। तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो इसको। हाउ डू एक्सेस स्टैटिक मेंबर्स इन जावा? यूजिंग क्लास नेम। Using class name, we can access static methods as well as static variables also. Difference between object and reference. Reference is the variable which is storing which store the object Address. Address or a reference of that particular object. What is object? Object is the actual memory location allocation where data is stored. Objects or references, which of them gets garbage collected? Garbage collector मतलब garbage क्या होता है जावा में? Garbage मतलब एनी अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट, उसे बोलते हैं गार्बेज। अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको कोई भी रेफर नहीं कर रहा, कोई भी उसको पॉइंट नहीं कर रहा, तो वो वैसा ऑब्जेक्ट बन जाता है अनयूज ऑब्जेक्ट या गार्बेज। ठीक है, तो गार्बेज कलेक्टेड कौन होता है? ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स गार्बेज कलेक्ट होना मतलब फ्री होना, मेमोरी फ्री होना, कौन होगा फ्री? ऑब्जेक्ट, रेफरेंस नहीं। The finalized method we haven't seen. This is part of object class. So there is a class called as object. In that we are going to learn 11 methods. So that time we will cover this. Can you pass objects as a reference, objects as arguments in Java? Answer is yes. What are wrapper classes? That also we haven't seen. Different types of wrapper classes. Different types of wrapper class अभी के लिए याद रखो। Wrapper classes मतलब क्या हो सकता है? आपके पास 8 primitives है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर और बूलियन। ये हो गए प्रिमिटिव। तो इन प्रिमिटिव को आपको एज अ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करना है, तो आपके पास 8 रैपर क्लासेस है। क्या क्या नाम है उनका? बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन, कैरेक्टर। तो करस्पॉन्डिंग 8 आपके पास रैपर क्लासेस। तो आप बोल सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैपर क्लासेस। ट्रांजिएंट कीवर्ड वी हैवंट सीन। ट्रांजिएंट का मतलब होता है सीरियलाइजेशन प्रोसेस। मतलब क्या होता है? एक जावा का ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर सेव करना परमानेंटली। तो आपको क्या करना है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे फील्ड्स रहेंगे, तो उस पर्टिकुलर फील्ड में आपको कोई एक फील्ड है, लेट्स से 10 फील्ड है, उसमें से एक फील्ड आपको सेव नहीं करनी फाइल के अंदर, तो उस फील्ड को आप लिखते हो ट्रांजिएंट। तो ट्रांजिएंट मतलब ऑब्जेक्ट का कोई फील्ड सेव नहीं होगा फाइल पे। सीरियलाइजेशन मतलब क्या होता है? What is serialization of an object? Serialization of an object मतलब जावा का ऑब्जेक्ट उसे परमानेंटली फाइल पे स्टोर करना। जावा का ऑब्जेक्ट परमानेंटली फाइल पे स्टोर करना, तो उसे बोलते हैं सीरियलाइजेशन। डी सीरियलाइजेशन जावा का ऑब्जेक्ट फाइल से रीड करना, राइट। तो ट्रांजिएंट एक कीवर्ड है जो हम सीरियलाइजेशन में पढ़ेंगे। ट्रांजिएंट अगर यूज करते हो तो होगा क्या? ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर फील्ड आप सेव नहीं करना चाहते हो, इसका मतलब होता है। Can we serialize static variables? Answer is no. We cannot serialize static variables. We can only serialize instance variables. What is type conversion? Converting one data type value into another data type value. That is called as type conversion. Explain about automatic type conversion and narrowing conversion. ये वही होता है implicit typecasting and explicit typecasting. Implicit typecasting मतलब ऑटोमेटिकली करेगा। इम्प्लिसिट मतलब एक छोटा टाइप का डेटा टाइप आप बिगर डेटा टाइप को असाइन करते हो, उसे बोलते हैं इम्प्लिसिट या ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। और नैरोइंग कन्वर्जन मतलब एक बड़ा वाला डेटा टाइप का वैल्यू आप असाइन करते हो छोटे वाले डेटा टाइप को, तो उसे बोलते हैं आप नैरोइंग। इंपॉर्टेंस ऑफ इंपोर्ट कीवर्ड। व्हाट इज द क्लास? अभी आप इंपोर्ट एक क्लास कर सकते हो, राइट। आप एक पर्टिकुलर पैकेज का एक क्लास कर सकते हो, या आप एक पैकेज का पूरा आप क्लासेस या जो भी कंटेंट इंपोर्ट कर सकते हो। स्टार करो वहाँ पे, पैकेज नेम डॉट स्टार किया तो उस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर जो भी क्लासेस हैं सारे आपके इंपोर्ट हो जाएंगे। व्हाट इज द नेमिंग कन्वेंशन फॉर पैकेजेस? ठीक है, ठीक है। पैकेज का कन्वेंशन क्या है? पहले तो उनका नेमिंग कन्वेंशन पूछा है। पैकेज मतलब पैकेज के लिए नेमिंग कन्वेंशन क्या है? लोअर कैमल केस। व्हाट इज क्लास पाथ?
It is the location of your dot class files which is used by your Java compiler also and JDK also. What is this jar? Jar stands for Java archive file. jar stands for Java archive file, जिसके अंदर आप क्या करते हो, डॉट क्लास फाइल्स का कॉम्बिनेशन बनाते हो. मतलब आपको लेट से कोई आपने एप्लीकेशन बनाई, आपको उसको किसी कस्टमर को देना है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, तो आप उसको क्या करोगे, पहले तो कंपाइल करोगे, कंपाइल होने के बाद आपको डॉट क्लास मिलेंगे और उन डॉट क्लास को आप जिप करते हो और उस फाइल को बोलते हैं जार. तो ये आप करते हो जार. व्हाट इज द स्कोप और लाइफ टाइम ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल? ओके, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब आपके वेरिएबल्स क्रिएट होंगे. परफेक्ट परफेक्ट. स्टैटिक वेरिएबल का क्लास लोडिंग, क्लास अनलोडिंग. व्हाट इज द लाइफ और अ स्कोप ऑफ पर्टिकुलर लाइक लोकल वेरिएबल्स? मेथड कॉल एंड मेथड एग्जीक्यूशन कंप्लीट. एक्सप्लेन अबाउट स्टैटिक इंपोर्ट्स. स्टैटिक इंपोर्ट्स हम देखेंगे. स्टैटिक इंपोर्ट्स मतलब आपको क्या करना है, हर टाइम आपको उसका पर्टिकुलर, लेट्स से मुझे कोई क्लास है, मैंने कोई क्लास, एक क्लास है, उसके अंदर स्टैटिक मेथड्स है मुझे, तो मुझे क्या करना है, हर बार क्लास नेम डॉट मेथड नेम, क्लास नेम डॉट मेथड नेम करना पड़ता है, राइट. तो मैं क्या करता हूँ, स्टैटिक इंपोर्ट किया तो मुझे क्या करना है, बस मेथड डायरेक्टली कॉल करना है. क्या करना है, क्लास का नाम लिखने की जरूरत है, डायरेक्टली आप मेथड का नाम लिख सकते हो. वी विल सी दिस ऑल्सो once we get some time. Can we define static methods inside interface? Answer is yes from Java 8. Java 8 का ये फीचर है. मतलब एक इंटरफेस क्या होता है, एक नॉर्मल जैसे जावा क्लास होती है वैसे एक क्लास होती है इंटरफेस, उसे फुली अनइम्प्लीमेंटेड क्लास बोलते हैं और उसके अंदर आप स्टैटिक मेथड लिख सकते हो, लेकिन कब से, जावा 8 से. डिफाइन इंटरफेस नहीं, हमने अभी तक नहीं देखा है, नहीं देखा है. ओके, कैन वी यूज स्विच स्टेटमेंट विद स्ट्रिंग्स? लिख सकते हैं ना. इन जावा हाउ डू वी कॉपी ऑब्जेक्ट्स? विल सी दिस आल्सो. उसे क्लोनिंग बोलते हैं, शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी. ओके, नाउ दिस क्वेश्चन, कैन समवन एक्सप्लेन मी what is procedural programming language or structured programming language and its features? Yes, and there is a more focus on your procedures only or functions. Yes. Correct, correct. And what about object oriented programming and its features? Object oriented programming focuses morely on object and class. So whatever the real world objects we have, we try to map them in the program also with the help of class and object. What are the features of these we have? Encapsulation, abstraction, inheritance, polymorphism. List of benefits of object oriented programming language. What are the benefits? नहीं. करेक्ट, जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम इजीली मैप कर सकते हैं प्रोग्राम में, राइट, और उनका कैटेगराइजेशन भी कर सकते हैं यूजिंग क्लास. और ऊप्स का यूज करके आप डेटा हाइडिंग कर सकते हो, डेटा सिक्योरिटी अचीव कर सकते हो, फिर कोड रियूजेबिलिटी अचीव कर सकते हो यूजिंग इनहेरिटेंस, और आप मल्टीपल फंक्शनलिटी डिलीवर कर सकते हो यूजिंग मेथड ओवरलोडिंग also, right. There are a lot of concept. Once we know the OOPS concept, we haven't started it, so we'll cover this in OOPS. Okay, traditional programming language and object oriented programming language. Traditional में फोकस होता है फंक्शन पे और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में फोकस होता है ऑब्जेक्ट पे. OOPS concepts will what are the OOPS concepts in detail? We have 4 concepts: encapsulation, inheritance, polymorphism, and abstraction. Encapsulation, you already seen that. Inheritance, polymorphism, and abstraction. This is the order we will follow. Inheritance we will be learning. Before that we already covered encapsulation, inheritance, polymorphism, and abstraction. So what is encapsulation? Okay, okay.
So inheritance we haven't covered yet, so we'll not cover this right now. Polymorphism also we haven't covered. In collection framework also we haven't covered. Okay, that's fine. Lot of questions. Serialization. Okay, that's I think lot of questions. Let's debug this. Now, if you see, we are calling zero parameters constructor, and inside that we have set the values id equal to 200, name equal to xyz. But before that, we have done only one thing. What is that? ID and name are assigned the value 100 in ABC. So you already gave the instruction that what are the object you are going to create the values with this, right? Now function f8 control comes here. Now if you see here, already values are assigned 100 and ABC. Now you are changing that. You are now changing that. 100 is changed to 200, ABC is changed to XYZ. Right? So what is the doubt here, Navdeep? So the doubt was when we write like a no argument constructor, initialization, we haven't for those variables. Like we have just done the initialization, but the values are given only when the object is created and we are assigning the values. Oh, but you already said in the variable declaration that what are the variable it will be having. So by default, they will have the value of 100. You have written that. So these values are not assigned when the object is created, or it is assigned the moment we create these variables. How is it like that? No, or the time of object creation. Object creation is nothing but a memory allocation for these variables. We have just written that. But when the object is created, that time these values are actually assigned. So by default, when the object creation process starts, it will take a look at this ID name, it will assign the value immediately, and then control comes here. Okay, so when I create this object, so the assignment these two values, the text variables, will be assigned. Correct. And Correct. Yes. Yes. So at this line itself, it will before that only it has assigned the value to ID and name. Then you are changing. This is later change. This is later change. that means block gets executed after instance variable initialization. Correct. Correct. Okay, sir. Yeah. So when coming in the batch method, if you print S out of ID and It will print 200 in XYZ now. We have changed that value, right? Yes. this using here, ID dot this one, right? You are saying employee dot ID. Employee dot ID will print 200. Employee dot name it will print XYZ. This why we haven't used? Oh my god, internet has gone. Okay, am I audible, right? ठीक है. Navdeep, am I audible online? Yes, sir. Okay, I thought internet's gone. Okay, this will be printing 200 and XYZ.